Yes, nuclear chemistry. XZA is called nuclide. Nuclide means only nucleus. Nuclide. Nucleus बोल सकते थे ना, लेकिन when we are discussing the nuclear properties, it is called a nuclide. Nuclide means only nucleus. And Z is called atomic number. A is called mass number. Now let me define the various terms which have distinct meaning. 1. Atomic number. What is atomic number? Number of protons in the nucleus. Number of protons. That's all. Because electrons, there is no guarantee. In fact, we are discussing only the nucleus, sans electrons. 2. Mass number, it is a number, and atomic number belongs to set of natural numbers, no fractions ever. Z is equal to 1 to 118. Mass number, this again is a natural number, protons plus neutrons. A belongs to N, can't be a fraction. 3. Isotopic mass, the mass of a given isotope. How is that calculated? Anybody? No, that is atomic mass. Isotopic mass, mass of protons plus mass of neutrons minus mass defect. We discuss mass defect later. Mass defect. इसको ठीक रखो. 4. This time it is atomic mass. What is atomic mass? It is the average of the isotopes relative to their abundance. Relative to their abundance. You have to consider their percentage abundance also. That is why these two are, you can get a fraction here. Now, the fifth one, isotopic number. ये क्या है? A minus 2Z. It is N minus P. Number of neutrons that are in excess to that of protons. 1123 में 12 neutrons है, 11 protons है. That excess difference 1 is called isotopic number. Why is that important? Progressively the isotopic number goes on increasing.
next. So these 5 terms are different. The number of neutrons which are in excess of protons. प्रोटॉन्स की कंपैरिजन से कितना ज्यादा है. नाउ आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर, different mass number. H11, H12, H13, hydrogen, deuterium, tritium, and the element with maximum number of isotopes is tin. Tin has nearly 10 isotopes. Only 40 students are there now. Total strength कितना 100 है क्या? Now, isobar exam. Okay, isobars, same mass number and different atomic number. Neon, argon 1840, कैल्शियम 2040, ये डिफरेंट है. आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट कुछ भी नहीं है. जर्मेनियम 3277 and arsenic 3378. Difference is 35 neutrons. 35 neutrons. Same number of neutrons. Isodiaphers, what are isodiaphers? Same isotopic number. Uranium 92 232, 92 protons, 140 neutrons. Thorium 90 230. A minus 2 Z, N minus P, 140 minus 92. आइसोटोपिक नंबर इसका कितना हो गया? 48. इसका भी 140 minus 90. 140. Am I right? गड़बड़ हुआ क्या? 140 minus 90. A minus 2 तो सेम है कि नहीं? देखो, हाँ, नहीं रहेगा ना. आइसोटोन्स, यूरेनियम को, फिर भी 234 क्या होता है? हाँ?
रहने दो, मैं करूंगा ना. सोडियम 1123, आइसोटोपिक नंबर 1, एल्यूमिनियम 1327. राइट. न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कल और भी कम हो जाएगा ना क्राउड, परसों 0 हो जाएगा एकदम. परसों आएंगे मतलब दिवाली कहानी बताने के लिए कैसे कैसे मनाए, टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. परसों डाउट्स क्लास होगा, डाउट्स एंड कल सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस पूरा 3-4 घंटा लगेगा. इसमें भी अभी 1 घंटा रह जाता है मेरे ख्याल से. काइनेटिक्स पार्ट विल बी लेफ्ट. न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. What if a nuclide is unstable? What if a nuclide is unstable? क्या होगा? क्यों अनस्टेबल बाद में बताऊंगा. अगर न्यूक्लाइड अनस्टेबल रहा तो इट डिकेस. इट डिकेस. What do you mean by decay? What do you mean by decay? Breaking means fission. दो टुकड़ा है ना, this is fission. Decay means थोड़ा 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 थोड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा, ऐसा. Small pieces. Now it emits alpha particles, beta, beta plus, of course gamma. During every decay, gamma is released. Why? When the decay takes place, nucleus becomes stable. As the nucleus is stable, its energy decreases. Energy is lost. Gamma is energy. What do you mean by alpha? Alpha, packet containing 2 protons, 2 neutrons. Helium nucleus, none other than. Beta minus is nothing but electron. E minus 1, 0. Gamma is nothing but energy. Beta plus is called positron. Positive electron. E plus 1, 0. Gamma is energy. H11. H11 क्या है? प्रोटॉन. ड्यूटीरॉन. ड्यूटीरॉन. What is deuteron? D12. 1 proton and 1 neutron. Gamma is energy. Neutrino is also small amount of energy. Anti? I don't know. I don't know any anti. The existence of antimatter is yet to be proved. Next, during alpha decay, Chiranjeeva.
During alpha decay, what happens? Atomic number decreases by 2. Mass number decreases by 4, and the position of the element moves 2 groups to the left. During beta decay, position of the element moves 1 group to the right. What is this nonsense? Soddy, Fajon, Russell's group displacement law. नोबेल प्राइज देना चाहिए इनको. Idiots. एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हुआ तो 2 ग्रुप्स इधर आता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा मैं बताऊंगा. नाउ beta minus, beta means beta minus, positron, positive electron, proton without mass. Now uranium 92-238 alpha क्या आएगा? 90-234. ये कौन है? थोरियम. ये दोनों कौन है? During alpha decay, isodiaphers are formed. Yeah, isodiaphers. Yes. Here 38 plus 8. 38 plus 8 are the isodiaphers. 8 plus 38, 46. वहाँ 34, 44. क्या है? कैसे? A minus 2Z कितना? 180, 234. यहाँ तो 44. मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ? 238 minus 92 कर रहा हूँ क्या? A minus 2Z करना है. A minus 2Z. बराबर. Now during beta decay, uranium 92-238. During beta decay क्या होगा? 93-238 आएगा. What is 93? Neptunium. So these two are isotopes. Isotopes are formed. No isotopes. Isobars. Now uranium 92-238 1 alpha 2 beta के बाद एक अल्फा गया, 2 कम हो गया, 2 बीटा गया, दोबारा सेम आया. यूरेनियम 92-234 आइसोटोप्स आएंगे. आइसोटोप्स आने के लिए एक अल्फा 2 बीटा का डेके होना है. एक अल्फा हुआ तो 2 घट जाएगा, 2 बीटा है तो दोबारा 2 वापस आएगा. 2 प्रोटॉन्स गया आया. Okay, next, factors affecting nuclear stability.
whenever such a heading is there, you have to say either temperature only or many factors, because factors affecting the rate of a reaction, there are many factors that affect the rate of a reaction. Factors affecting equilibrium constant depends on temperature only. Factors affecting position of the equilibrium, many, बहुत सारे है. Concentration बदला तो position of the equilibrium बदलता है, temperature वैसे pressure. Now, here many. First one of them, I rather later when मैं बोलता हूँ, first factor God is responsible for nuclear stability. वो कैसे? ये देखो, एक मूवी का रिव्यू, स्टोरी नाम का चीज नहीं है, म्यूजिक गाने बंद करना है, एक्टिंग उसको एक्टिंग बोलते भी नहीं, लेकिन मूवी सुपरहिट है. N/P रेशियो प्रॉपर नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी न्यूक्लियर स्टेबल है. हाँ, हु इज रेस्पॉन्सिबल? गॉड. नाउ 2. Two, presence of neutrons. क्या करेंगे न्यूट्रॉन्स? Neutrons play the role of police. They see that people don't fight with each other. Proton है ना? Neutrons stand guard, G-U-A-R-D, guard the nucleus. ठीक है ना? ऐसा. They see that protons don't disintegrate. Decay बोलो, disintegrate बोलो, सेम है. Disintegrate, छोटा टुकड़ा होना. Disintegrate. Integrate means छोटा चीज को ऐड करना. Disintegrate means छोटा. एक लाडू से थोड़ा तिनका. Laddu. Now, 3. Third one is very important. Yukawa's forces. Yukawa was given Nobel Prize in 1932 for this. Nuclear forces. Where do they operate, Baba? Where do they operate? Protons, neutrons. No, in a distance less than 10 power minus 12 centimeters. 12 या 15? 15. Fermi, 10 power minus 15 centimeters. इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस होगा क्या? They exist only inside the nucleus. Did you study this Yukawa's theory? हाँ? हाँ, फिजिक्स में है ना. देखो, how will a proton stop another proton from disintegrating? एक प्रोटॉन क्लास से बाहर जा रहे, ये क्या करेगा? This proton will throw क्या? प्रोटॉन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज और मास है ना. ये क्या करेगा? How will a proton stop a neutron? That is the question. How will a proton stop a neutron? एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है ना. 5+ मेसान छोड़ेगा. 5+ मेसान. What is 5+ मेसान? Small amount of positive charge. थोड़ा सा इसके ऊपर फेंक दिया. And a proton becomes a neutron as a result, and neutron becomes a proton. How? कैसे? यहाँ क्या था? पॉजिटिव चार्ज एंड मास था ना. अभी पॉजिटिव चार्ज गया सिर्फ मास. And the 5+ mesons will be moving between the proton and neutron like electrons do around two nucleus. न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जैसे घूमते हुए ये जा रहे तो
उस उधर जाके उसको पकड़ के लाएंगे, ये दोबारा इधर आ जाएंगे. Between two people, he is going. I will run and catch him. When I go there, this fellow starts disintegrating. दोबारा इधर आके इसको ऐसा. How will neutron stop a proton? न्यूट्रॉन के पास क्या है? न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज एंड मास. नो चार्ज को क्या बोल सकते हैं हम? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ये माइनस दे देगा. न्यूट्रॉन थ्रोस पाई माइनस मेसॉन. व्हाट इज पाई माइनस मेसॉन? स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. मेरा मार्कर गायब कर दिया. ऐसे छोटा छोटा इरेज करने के लिए हाथ से करना पड़ता है, एंड दैट इज एलर्जिक. नेक्स्ट, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, pi minus mesons will be 3. Meson? नहीं. That is a nuclear particle, fundamental particle. pi minus, अभी न्यूट्रॉन बनेगा क्या? माइनस चला गया तो नो चार्ज मीन्स बोथ पॉजिटिव नेगेटिव है, जिसमें से माइनस चला गया तो पॉजिटिव एंड मास, दैट बिकम्स अ प्रोटॉन. नाउ प्रोटॉन प्लस पाई माइनस मेसॉन. नाउ हाउ कैन ए प्रोटॉन स्टॉप अनदर प्रोटॉन? एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन को कैसे पकड़ रखेगा? बाय यूजिंग द मास पाई जीरो मेसॉन. पाई जीरो, ठीक है ना? पाई जीरो मेसॉन. व्हाट इज पाई जीरो? ओनली मास. इसीलिए मास डिफेक्ट आता है. थोड़ा मास निकल रहे ना, दैट इज. नाउ थोड़ा मास बाहर गया, न्यूट्रॉन पाई जीरो मेसॉन. पहले ऐसे थिक लाइन लिखना है, बाद में पाई जीरो. हाँ, कौन सा? हाँ, no, pi zero meson means small amount of mass which is converted to energy, to bind them. That is nuclear forces. Now हाँ, चार्ज नहीं है, इसीलिए मास जाता है. मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी. माइक्रो लेवल मास एंड एनर्जी आर वन एंड द सेम. आइंस्टीन ने बताया ना, एट ए माइक्रो लेवल वही मास है, वही एनर्जी. Now, mass defect. Third, fourth point. Mass defect. When nucleons combine, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में है ना, nuclear physics. When nucleons combine, they lose a part of their mass. They lose a part of their mass, which is converted to
energy which binds the nucleons and is called binding energy. Now, how will you calculate mass defect? Yeah. Mass of protons plus mass of neutrons plus mass of electrons minus isotopic mass. सुनो, delta M of XZA, mass defect of XZA, Z protons है ना, Z into mass of proton, क्यों ना भाई, Z into, we have Z protons, Z into mass of proton plus A minus Z into A minus Z neutron, mass of neutron minus plus Z into mass of electron minus isotopic mass, let me call it capital M, isotopic mass. Now, Z into mass of protons, Z into mass of electrons means one proton, one electron, कितना? Hydrogen atom. So, Z into mass of hydrogen, which accounts for this and this, plus A minus Z into mass of neutron minus isotopic mass N, isotopic mass. That is the mass defect. Binding energy per nucleon. आ जाऊंगा. Binding energy is equal to, it is, wait a minute, it is the energy that is released when a nucleus is formed. It is the energy that is released when a nucleus is formed, or it is the energy required to break the nucleus. देखो, मैंने एक पार्क में गया था, वहां मेरा पर्स गुम हो गया जिसमें 10,000 है. मैं क्या करूंगा? उधर ही घूमता रहूंगा. मैं उधर से नहीं निकलूंगा जब तक वो मुझे वापस नहीं मिलेगा. मुझे वहां से भगाना है तो मुझे 10,000 देना है. कोई आके 10,000 दिया तो वहां से चला जाओ. So a kind of bonding is formed between me and the park when my money is lost. अगर पैसा मिल जाता मैं चला जाऊंगा, डिसइंटीग्रेट हो जाता. And binding energy is equal to delta mc square. C is velocity of light. Einstein's mass energy equivalence. Yes. Now, have you seen Three Idiots? महीने में एक बार देखते रहो. तारे जमीन पर, दोनों सुपर ऑस्कर मूवी से. Now, for when a mass क्या
when a mass of free rosolization paran nitrate, when a mass of वो साइलेंसर की जैसा मत पढ़ो, when a mass of 1 AMU is annihilated, when a mass of 1 AMU is annihilated, what do you mean by annihilation? Hello? Finish means? Khatam means what? Disappear, लापता होना है. देखो, combustion is different. Combustion means nothing is happening. Carbon becomes carbon dioxide. It is there in the form of powder, ash. CO2 H2O चला जाएगा, लेकिन rock बन जाएगा ना. The other chlorophyll etc. When a mass of 1 AMU is annihilated, 931.5 million electron volts of energy is released. Electron volt कितना होता है मुझे नहीं मालूम. Very small amount of energy, yeah? Is that? erg से भी कम है ना. Next. Listen. दो न्यूक्लियाई भाई, दो न्यूक्लियाई. Sure. इसका बाइंडिंग एनर्जी 10 है, इसका बाइंडिंग एनर्जी 20 है. विच इज मोर स्टेबल? दो न्यूक्लियाई है, इसका बाइंडिंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इसका बाइंडिंग एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. विच इज मोर स्टेबल? You can't say, why? It depends on कितने न्यूक्लियन. स्टेट गवर्नमेंट ने दो स्टेट्स को, दो राज्यों को 100 करोड़ दिया. विच स्टेट पीपल आर मोर हैप्पी? कांट से. यूपी को 100 करोड़ दिया तो बटाना भी नहीं मिलेगा उसको, बच्चों को बटाना भी नहीं खरीद सकते. अगर यदि जाके और मेघालय को दिया तो, मेघालय जहां पॉपुलेशन 10 लाख है, लोग तो हार मनाएंगे. वटाना नहीं मालूम. पीस, पीनट्स, ग्रीन पीस, मटर. नाउ हियर, सो इट डिपेंड्स. Binding energy per nucleon, also called average binding energy. Average binding energy. Even this is also not final. Hello, average binding energy दो न्यूक्लियस का, एक का 10 है, दूसरे का 20. Which is more stable? We can't say. ठीक है ना. 1 करोड़ रुपया दिया तो, मुझे दिया तो बहुत खुश हो जाऊंगा. यदि अंबानी को दिया तो क्या कहेगा? अंबानी के लिए 1 करोड़ कुछ भी नहीं, उसके लिए 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी दे दो, नहीं चलेगा, स्टेबल नहीं बनेगा. नाउ सो greater the average binding energy for a given nucleus, greater the BE by A for a given nucleus, greater the stability. Given nucleus, greater the stability. है ना. सेम पर्सन को जितना ज्यादा दिया उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट. एंड वंस अगेन, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ना, ऐसा कुछ तो ड्रा करते. दैट इज ओनली, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर. दैट इज ओनली descriptive in nature.
not prescriptive. That doesn't prescribe anything. देखो, इसको 20 मार्क आया, इसको 30 मार्क आया, without adding any comment. हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी कितना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बाइंडिंग एनर्जी कितना, it is descriptive in nature. It just describes how much a particular nuclide has with an atomic number, certain atomic number. लेकिन उसमें वो खुशी हो गया कि नहीं हो गया? एक लड़का को 94 आया, he was unhappy because every time he gets 100 out of 100. एक लड़का को 14 आया, बहुत खुश हो गया क्योंकि कभी ही इन्होंने पॉजिटिव नंबर नहीं देखा, कभी देखा -4 -10 ऐसा था। जीओसी में टेस्ट दिया तो तुम लोग पॉजिटिव नंबर आया तो कितना खुश होते? जीओसी में कभी पॉजिटिव आया ना? ठीक है ना? सो ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी। नाउ iron 56 thermodynamically most stable nuclide with an average binding energy of 8.8 million electron volts. Million electron volts? No, 8.8 electron volts. 8.8. So, सबको 8.8 होना जरूरी है क्या? सभी को? हाइड्रोजन का 2 या कुछ तो है, हाइड्रोजन का 4 या 2, I do not exactly know. हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी H11 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन, I think it is 4. हीलियम का 6. With a question mark, I don't know. Exact value is नहीं मालूम. ठीक है ना? And iron has iron 56 8.8. Radioactive elements have ऐसा 7.7. Radioactive elements they have less than 7.7 electron volts. तो 7.7 से कम रहा तो कोई भी अनस्टेबल होगा क्या? नहीं, इधर देख रहे हैं दो लोग हैं, सभी को 8.8 होना है क्या? हाउ इज इट पॉसिबल? सबको तो होगा नहीं, दैट इज हाईएस्ट. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑन दिस ग्राफ इज इनकंक्लूसिव. इट इज डिस्क्रिप्टिव बट नॉट प्रिस्क्रिप्टिव. तुमको ये आना चाहिए, तुमको ये आना चाहिए करके प्रिस्क्राइब नहीं करता. Next, N/P ratio. This again is very confusing. Up to Z is equal to 20, N/P ratio remains to be 1. But that is also not true, because odd number है ना, 11, 23, 12 by 11. ठीक है ना? अप टू Z is equal to 20, N/P is equal to 1. हाँ, ये देखो, number of protons, number of neutrons. What does this tell you? What does this tell you? As the number of protons is increasing, the number of neutrons is increasing, and it is moving towards the axis of neutrons. Yes, sir. The gap is increasing. What does it tell you?
What does it tell you? What does it give you? The minimum number of neutrons required and the maximum permitted number of neutrons, है ना? For a given number of protons, the minimum and maximum number of neutrons is given by this stability curve. This is called stability zone. Stability zone. अगर इधर रहा तो n by p, above it will try to come into this, and इधर रहा तो ऐसे जाने. कैसे जाएंगे मैं बताऊंगा. हाँ, कौन सा? स्ट्राइट लाइन. हाँ, ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहाँ मिनिमम मैक्सिमम दो रेंज है ना. स्टैनम 50 प्रोटॉन्स आर देयर. इसका न्यूट्रॉन्स कितना होना है? मिनिमम 60 होना है, मैक्सिमम 70 होना है. 60 से कम नहीं होना, 70 से ज्यादा नहीं होना. 60 से कम हुआ तो भी दिक्कत है, 70 से ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत है. बहुत दिन हो गए मैं खड़ा होके पढ़ा के, फॉर द लास्ट 1 ईयर घर में बैठ के पढ़ा रहा. तो यहाँ आने से पहले बहुत डर था whether I will be able to stand or not, but fortunately यही ज्यादा अच्छा लग रहा है. वो बैठ के पढ़ा है तो कंसंट्रेशन नहीं रहता मेरा. घर जाने के बाद चेंज 17 बच्चों को दूर में बिठा के, बच्चे पास में बैठ गए तो इंटीमेसी ज्यादा होके कार्डियल रिलेशन बहुत ज्यादा हो. दे आर बिकम टू कैजुअल. तुमको 33 आवर्स में इनऑर्गेनिक पूरा कर दिया ना, उनको 100 घंटा पढ़ाया मैंने. लेकिन वो सीखा कुछ भी नहीं. नाउ n by p greater than 1 है तो क्या करना है? देखो मेरा बीपी कभी भी 180/100 रहता है. मुझे क्या करना है? 180/100 हुआ तो आई नीड नॉट रन टू ए डॉक्टर. उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आए तो जाना. मेरा टेम्परेचर कभी भी 97 रहता है. आई एम कोल्ड ब्लडेड मैन. ठीक है ना? कोल्ड ब्लडेड, खूनी कोर. ठीक है ना? 97 ऐसे देखा तो बुखार से जैसा लगता है. थर्मामीटर लगाया तो 97. सो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो आई हैव टू अप्रोच ए डॉक्टर. ट्रैकीकार्डिया, दिस पल्स रेट इज सपोज टू बी 72, लेकिन कुछ लोगों का कभी भी 90 रहता है. दैट्स नॉट ए बीमारी. 72 इज वर्ल्ड एवरेज. 72 एवरेज कैसे आएगा? ऐसा 90 वाले लोग है तो ही आता है. तो 90 की वजह से अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो क्या बोलते हैं, पसीना आ रहा, a person becomes getting tired quickly, टायर हो रहा था, then he has to go and see a doctor. So n by p greater than 1 हुआ तो n by p greater than 1 हुआ तो ये एडमिट करना है जरूरी नहीं. n by p is greater than 1 and a nuclide is unstable because of that, and a nuclide is unstable because of that. क्या हो रहा है? कौन है? VHD लिखा है क्या?
number. Ignore. N may be greater than 1 and a nuclide is unstable because of, precisely because of that. उसकी वजह से ये अनस्टेबल आया, तो उसी की वजह से अनस्टेबल आया, तो देन क्या करना है न्यूक्लियस को? 1 बोल क्या करना है? न्यूट्रॉन ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल C614, C614 में क्या है? 8 न्यूट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 6 प्रोटॉन्स, 1 2 3 4 5 6. देखो, हाँ ये बंद कर.